Well, guys, welcome back to the vlog again. So, we are done with the ride, and the best part is the bike is really dirty. As you can see, the rear tire chain sprocket has a lot of dust, mud sticking onto it. So, here she is after her first trail ride. So, one thing I must admit, एक्सपल्स बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यार एंड आई वॉज सरप्राइज विद इट्स ट्रैवल इट्स रियली गुड इट टेक्स ऑल द बम्प्स and even the ground clearance is pretty good. I didn't hit any stone, rock, nothing. I could like wade away all the obstacles which came across. So let's go and get a good bubble bath for our baby. यहाँ पे कहाँ गया वॉशिंग वाले भैया? कोई है नहीं। दादा चलो ले लो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। Well, the washing is done. कपड़ा मार रहे हैं छोटू भाई। So बस यार अब नेक्स्ट राइड के लिए बाइक तैयार है। साफ़ सफाई तो हो गई, बस चमका के अभी बस घर जाके इसको पार्क कर देंगे और नेक्स्ट वीकेंड के लिए शी इज़ एब्सोल्युटली रेडी। वाह, एक अच्छा वॉशिंग के बाद ना बाइक की ना लुक बदल जाती है कम्प्लीटली। यू गेट अ न्यू बाइक फीलिंग। वैसे तो है नई बाइक, बट फिर भी लाइक व्हेन यू मेंटेन योर बाइक रेगुलरली, every time when you sit you feel that you're sitting on a new bike. मैं तो बहुत मेंटेन करता हूँ यार अपने बाइक्स को। आई एम वेरी possessive about my machines, and I make sure that like they are neat and clean whenever I hop on them for the next ride. देख रहे हो क्या चमक रही है? साफ सफाई हो गई, अब हमें घर जाना है। घर जाके वापस एक और बाइक लानी है। वो बाइक है बेनेली TRK 502, इसका बड़ा भाई। दूसरा बाइक लेके आ रहा हूँ अभी, ठीक है? अभी कोई गाड़ी मत लेना, मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में।
as well. That's a beautiful video. So guys, ये रहा हमारी टस्कर. तो अभी फटाफट टस्कर को निकालेंगे और इसको भी लेके जाएंगे थोड़ी. बीवी को पता चलेगा तो वो बहुत सुनाएगी. बट एनीवेज, तो अभी टाइम है बेनेली को. अच्छा, मैं आपको उससे पहले ना गाड़ी दिखा देता हूँ, दोनों गाड़ी को साइड बाय साइड. वाह. सो गाइस, दिस इज माय बेनेली TRK 502. सो इसके बाद मैंने एक्सपल्स ली. दिस इज हाउ शी लुक्स. सो अभी वॉशिंग करके ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा. ये एक्चुअली बिल्ली का काम है. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. एक बिल्ली हमेशा आती है यहाँ पे और सीट के अंदर यहाँ पे रात को चुप के बैठ जाती है. चलो कोई नहीं, until unless she is not harming by any of the wiring harness. Engine start. Okay. Neutral. Lovely. इसकी टायर प्रेशर भी चेक कराना, तो बगल में ही दुकान है तो टायर प्रेशर भी चेक हो जाएगा. अलग ही फीलिंग है एक्चुअली. एक्सपल्स चलाने के बाद इमीडिएटली फिर TRK पे स्विच करूँगा तो आई sort of feel the complete weight of the bike, because Xpulse weigh around 151 kilograms and TRK is 246 kilograms. Both dry weight. Almost मतलब 90-100 किलो का फ़र्क है. वो फ़र्क बहुत जल्दी महसूस होती है जब आप एक लाइट वेट बाइक से आप हैवी बाइक पे स्विच करते हो. बट लेकिन लकीली अब मुझे इसकी इतनी आदत हो चुकी है, आई बेयरली फील इट. एक सेकेंड हल्का सा, मतलब 1 मिनट के लिए फील होता है, ओहो यार ये एक्सपल्स नहीं है, ये बेनेली है. अदरवाइज नथिंग. सो दिस बाइक आई हैव ऑलरेडी ड्रिवन 6980 kilometers in the last 5 months. So far I'm really happy with the bike. She behaves absolutely stunning. The performance of the bike is so good. So though power to weight ratio इसका थोड़ा सा appealing नहीं है. It's not that fascinating, but I'm that kind of a rider that I don't really when I'm doing touring especially, I need some calm, composed bike which can take a linear power band. मतलब I don't want that rev, like जैसे KTM 390 में क्या है कि मतलब that bike needs to keep it in the power band. मतलब it's always on the rev line. Even the riders for that matter, जितने भी फेलो राइडर्स है जो KTM 390 एडवेंचर चलाते हैं, उनका जो थोड़ा बिहेवियर भी ऐसा ही है. दे आर लाइक वेरी एग्रेसिव एंड इंटिमिडेटिंग राइडर्स. सो मेरे लिए मतलब इतना कुछ इनिशियल टॉर्क, इनिशियल पावर की ज़रूरत नहीं थी. सो विच इज़ वाई आई ड्रॉप KTM. आई कैन नॉट कीप दैट बाइक ऑलवेज इन द पावर बैंड. आई वॉन्टेड समथिंग लाइक लाइक अ वायलिन. Start with this low key note, धीरे धीरे you increase the note. So something like that. This machine is exactly like a violin. You start playing it in a low note, धीरे धीरे आराम से इसको एक पावर बैंड में लेके जाओ और it can easily touch 130, 140. Very easily. Within 10 seconds I guess maximum. I'm like at 130, 140, and my average cruising speed is somewhere between, I keep switching between 100 to 120. So लगभग मेरा 70-80 के आसपास मेरा एवरेज निकल के आता है. So I recently did this जैसलमेर trip, so the entire राजस्थान circuit. So उसका जो
ओवरऑल एवरेज स्पीड मुझे निकल के आया था अराउंड लाइक 70 किलोमीटर्स पर आवर. दैट वाज अ गुड स्पीड इन इंडियन रोड्स. यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 3000 किलोमीटर्स का एवरेज स्पीड. दैट इज़ अराउंड लाइक 70 to 75 किलोमीटर्स जो मैंने कैलकुलेशन किया था. सो दैट वाज अ डिसेंट इनफ स्पीड विद द रोड कंडीशंस दैट यू गेट हियर. मज़ा आया, तो बहुत मज़ा आया. Which is why, you know, like I prefer taking benelli for all the long routes. So whenever I ride, I do at least like 200 to 300 kilometers minimum, and the maximum that I have done so far in a single day is 690 kilometers in a single day. So that is the single day, you know, half iron butt that I have done. So एक बार मैं आपको अभी बाइक दिखाता हूँ. So this is how she looks. So मैंने कुछ mods किए इसमें. So upper crash guard is an extra fitment, and as well as like you have 2 pairs of auxiliary lights. One is Alpha and Scout X. Apart from that, I also have Cyclops installed. Both the headlights are LED setup, and some easy tags from ProSpec for mounting my GoPros, and this is for the water bottle, and I have mobile holder from the SP Connect, and ये भी windshield extender ProSpec का है, बहुत बढ़िया है. And you know, like now my wind blast is 0 to 0. And apart from that, what I have done, yeah, I've got a tank bag installed. So tank bag तो अभी घर रखा हुआ. And this is my, you know, go-to luggage carrier from Givi. So I can fit in my helmet, riding gears, gloves, everything. ये तो मतलब मेरा एक छोटा घर है. ये बाइक पे मैं जाता हूँ तो मतलब मैं लिटरली फील करता हूँ कि यार हाँ मैं घर लेके जा रहा हूँ अपना पूरा सामान के साथ, लैपटॉप मस्त सब कुछ. चलो इसको बोलते हैं अभी साफ़ करने के लिए. दादा चलो ले लो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है मेरे को, बस एक मीटिंग भी है. हाँ जाना है टाइम. हाँ लाइट गई है. अरे यार लाइट गई है, कब गई? अभी गई? अच्छा चलो ठीक है, फिर वेट करते हैं. आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जुगाड़ है तो देख लो. तब तक हवा मार लो इस पे. मतलब ये भी नहीं, जनरेटर भी नहीं है क्या आपके पास? तो चालू करके हवा तो मार लो तब तक. तो डस्ट है ना, थोड़ा डस्ट निकल जाएगा पहले. थोड़ा वो पत्ते वत्ते सब गिरे हुए हैं, ताकि जब साफ करेगा ना तो मिट्टी जो भी वो पत्ते वत्ते सारे हट जाएंगे एक बार. ठीक है, बाकी वेट करते हैं. चलो गाइस, यहाँ पे ना अभी तो ये नहीं है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर गई है, तो वेट करना पड़ेगा वॉशिंग के लिए. जैसे लाइट आते हैं इसका वॉशिंग चालू करते हैं फिर. Well guys, finally power आ गई है and the washing has started. So this guys really clean the bike very well. They use a special product for foam cleaning. So अभी ये washing के बाद पानी वानी मारने के बाद foam cleaning start होगा. I'll show you. They are really good in the washing. They charge very nominal guys. It's just like 50 rupees for the bike wash and 200 rupees for the car wash. घर के पास ही है. This is really an added advantage. पूरा मिट्टी विट्टी सब कुछ साफ़ हो गया. सो बाइक साफ़ सफाई होने के बाद what I do is basically I take the bike, park it in my parking, and I make sure that if the bike gets dried up immediately, then I start my chain lubrication and greasing and everything. I'll make a separate video on the chain lube. I'll tell you all the do's and don'ts, what product to use, how to use, what tools to use, all those things. I'll make a separate video on that. So this is what I call it, as a bubble bath. So the product what they use is a industry grade foam soap product. कभी भी मतलब वॉशिंग के बाद मुझे स्वर्ल मार्क्स या एक होता है ना, एक वॉशिंग के बाद आपकी गाड़ी फिर भी ऐसी लगती है कि यार इस पे ना कपड़ा नहीं हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है. So I have never felt such complaints. I have never got that complaint ever since I'm getting my bikes washed from this center. So
सो फोम तो हो गया, बबल बाथ तो हो गया इसका। अभी बस कपड़ा वपड़ा मार के इसको साफ़ करेंगे एंड अगेन उसके बाद ऑफ कोर्स वाटर वॉश एंड देन क्लीनिंग। भाई यार मीटिंग 2 बजे की थी, चालू हो गई, 6 मिनट हो भी गया, बस मीटिंग में ज्वाइन कर लो फटाफट। वो स्कैनर कहाँ है पेमेंट का? तो गाइस पेमेंट हो गया, तो अभी हम चलते हैं घर।